Hello students. So next class में capacitance of a conductor. To a spherical conductor capacity component C is equal to 4 pi epsilon 0 r. So that implies C is directly proportional to r. The greater the size of the sphere, more is its capacity. So हम देखिले for 1 microfarad capacity पाई the size of the sphere or the radius of the sphere is 9 km. That is very large. Running. So in our electronics by electrical device में जो capacitor लागू से next class से कही for in example in a ceiling fan the capacity is 2.5 microfarad. So in order to get the 2.5 microfarad we need a spherical conductor of a radius 22.5 kilometer of radius, which is very large, and it is not practically possible to install in a ceiling fan. So we have to adopt another technique how the capacity of a conductor increases. So that is known as a capacitor. Ready? Capacitor. Capacitor it is an electric device. It is an electric device that stores charge. Very huge charge in a small region that stores a huge charge in a small region ହେଲା तो ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ଷ୍ଟୋର କରି ପାରୁଥିବା डिवाइस ର ନାମ ହେଲା capacitor. It is an electric device that stores huge amount of charge in a small region. हैला अल्प जगह रे कोन करूछे अधिक चार्ज स्टोर करि पारुछे. तले हाउ इट इज पॉसिबल? तले केमती अल्प जगह रे चार्ज स्टोर करि पारुछे? तले प्रिंसिपल it is based on the principle that it is based on a principle that already so the capacity of a conductor is increases the capacity of a conductor increases now when an earth conductor is placed near to it near to it हैला जदी ए कंडक्टर पाखरे गोटे कंडक्टर पाखरे आमे गोटे कोन रखिबा गोटे अर्थ कंडक्टर अर्थात कंडक्टर दैट इज कनेक्टेड टू द अर्थ आमे रखिबा तले कोन होबो द से कंडक्टर र कैपेसिटी पूर्व अपेक्षा अधिक बढ़ी जिवो हैला इट इज बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल दैट the capacity of a conductor increases when an earth conductor is placed near to it. तल जति गुटे अर्थ कंडक्टर को नै कि गुटे कंडक्टर पाख रखिबा तबे से कंडक्टर रे पूर्वरु जति कि चार्ज कैपेसिटी थिला अर्थात पूर्वरु से जति कि चार्ज होल्ड करिवा कैपेसिटी जति कि थिला एबे कोन अवश्य अधिक करि परिबो हलानी तले
it can hold the more amount of charge ହେଲା तो this is the principle of kahara the capacitor चलो अर्थात suppose एटा गोटे कंडक्टर हैला तले माने कर एटा गोटे कंडक्टर तले आर कैपेसिटी केते आमे जदी आमे आको q अमाउंट ऑफ चार्ज थवा आर पोटेंशियल केते हैला v तले कैपेसिटी केते गेला ना c is equal to q by v हैला तो दिस इज ए कंडक्टर whose capacity like this c is equal to q by v अर्थात तले आमे जदी आको मैक्सिमम चार्ज q दबा त मैक्सिमम राइजिंग पोटेंशियल केते गेला v तो दिस इज c is equal to q by v तले हाउ टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी तले ए जो कंडक्टर आमे कैपेसिटी केमि बढ़ेबा तो देखो गोटे बॉटल हैला तो बॉटल रो कैपेसिटी हैला 1 लीटर हैला ए कंटेनर का बॉटल आर कैपेसिटी हैला 1 लीटर अर्थात इट कैन होल्ड 1 लीटर ऑफ लिक्विड बट व्हाट टेक्निक यू अडॉप्ट टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी इंक्रीज कैपेसिटी माने ये अधिक पानी ने प्रिपेयर करिवो 1 लीटर पानी धरतला एबे हमें कोन करबा और अधिक पानी केमति धरिबो बा अधिक लिक्विड केमति धरिबो ना बाय एनी मींस वी हैव टू क्रिएट एम्प्टी स्पेस इन द बॉटल तो हमको कोनस ना कोनस बाटरे ये बॉटल भीतर एम्प्टी स्पेस तयारी करियो पड़िबो तर एम्प्टी स्पेस तयारी करले हम कोड पानी डालिबो जदी एम्प्टी स्पेस तयारी न करबा 1 लीटर पानी कोन हे गला भर्ती हे गला किंतु हमको बाय एनी मींस हम कोन करियो पड़िबो एम्प्टी स्पेस तयारी करियो पड़िबो तो एम्प्टी स्पेस तयारी करले पूरी बॉटल भर्ती होबा पई हम कोन करियो पड़िबो अधिक लिक्विड दो पड़िबो इन दिस प्रोसेस तो एम्प्टी स्पेस क्यों करियो पड़िबो ना पे फॉर्म में लीकेज हियर हमें जोडे लीक कर दो तो लीक कर देले कोन हे इट देयर इज एम्प्टी स्पेस तेनु हमको कोन करियो पड़ो कोन अधिक पानी ढालियो पड़िबो ठीक से बेला बरे हमें एठी कोन करबा ना जते बेले हमें ए कंडक्टर को हमें कोन करले चार्जिंग करले तल प्रत्येक कंडक्टर रो गुटे निर्दिष्ट कैपेसिटी तो आर कैपेसिटी लाइक c is equal to q by v अर्थात q is the maximum charge and v is the maximum rising potential तो हमको बाय एनी मींस आर पोटेंशियल कमेवा को पड़िबो तो जदी ये कंडक्टर रो पोटेंशियल कमे दबा पूरी सती के पोटेंशियल राइज होबा पई कोन इट होल्ड्स मोर अमाउंट ऑफ चार्ज तो कैपेसिटी कोन हे गेला बढ़ी गेला तो हमें कोन करले आर कोन हो पोटेंशियल रे कमियो नै बर्तमान एटा थिला कंडक्टिंग बॉडी आमे जदी ता पाखरे आ गुटे कोन करबा नॉन कंडक्टिंग एटा ला कंडक्टिंग बॉडी चार्ज बॉडी एटा ला चार्ज बॉडी एटा अनचार्ज जदी अनचार्ज बॉडी टाणी ता पाखरे रखिबा ताले कोन होबो ताले जते बेले एठुडे चार्ज बॉडी अछि हला आमे एटा अनचार्ज बॉडी ताले कोन होबेटी सपोज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज यस ताले एठी कोन हे गेला चार्जेस आर इंड्यूस्ड हलाडी ऑन बोथ साइड सरफेस ताले एक बॉडी बात तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ बस तुम्हारा कोटा इंडक्शन प्रोसेस अनुसार त नियर सरफेस रे नेगेटिव चार्ज एवं फार सरफेस रे कोन हो पॉजिटिव चार्ज तो एपटे त नेगेटिव चार्ज सृष्टि हला त एटी कोन हे गेला पोटेंशियल ए जगह रे पोटेंशियल कोन हे गेला चेंज हे गेला तो ए जो कंडक्टर परे केतेरा पोटेंशियल हला गोटेला वन पोटेंशियल v आउटेला पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आउटेला पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज तल तीनटा पोटेंशियल कोडी काम कला ऑन दिस रीजन तल आ ऊपरे तीनटा पोटेंशियल गोटेला v माइनस आउटेला v प्लस तल टोटल पोटेंशियल केते गेला ना v डैश तल v डैश इज इक्वल टू v प्लस v माइनस प्लस v प्लस तले v हला कोन जहा ओरिजिनल थिला v माइनस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज v प्लस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज तले एबे कोन होबो देखो तले v माइनस और v प्लस तले आ भितरे एठी जति की नेगेटिव चार्ज एठी सति की पॉजिटिव चार्ज तले ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एठी कोन होबो ना एठी पोटेंशियल केते होबो एठी पोटेंशियल केते होबो जेहेतु हमें जानि छ v इज इक्वल केते दिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q by r तो माने v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r तो एठी जेते जति की नेगेटिव सति की पॉजिटिव तो एठी कोन द पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एठी कोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो एठी द डिस्टेंस है एठी द डिस्टेंस सेम हो तो नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस ता कम तो एठी कम थिबारु तो v नेगेटिव the potential due to negative is more than potential due to positive charge तेणु कोन हे गेला तले एटा नेगेटिव पोटेंशियल अधिक पॉजिटिव पोटेंशियल कम तेणु एटा कोन हे गेला तले v डैश डिक्रीजेस फ्रॉम इट्स
इनिशियल वैल्यू तो इनिशियल वैल्यू जति के थिला एबे हमें गोटे कंडक्टर रखि दा पळरे नियता पाखरे कोणे गला v डैश ता कमी गला हलानी तो जतो v डैश कमी गला अगेन टू राइज द पोटेंशियल v पुणे पूर्व v को आने पहले हमको कोन करे पड़िबो वी हैव टू ऐड मोर नंबर ऑफ चार्जेस हमको और अधिक चार्ज दो पड़िबो तो कोन हैला त कैपेसिटी बढ़ी गला तो एबे हमें कोन करबा त इफ द आउटर सरफेस इज कनेक्टेड टू द अर्थ तो दिस इज योर अर्थ कंडक्टर जदि आउटर सरफेस तक हमें अर्थ से कनेक्ट कर दबा तले कोन हबो दिस पॉजिटिव चार्ज लिंक्स टू द ग्राउंड तो रहिला के नेगेटिव चार्ज त माने एटा कोन कंप्लीटली एटा जीरो हो गेल तले रहिला केते तने v डबल डैश इज मच लेस देन v कारण एटी कोन थिला v माइनस समथिंग प्लस समथिंग ए प्लस ता जीरो हो गेल त माने एटा कोन हैला सपोज 20 थिला यस माइनस 10 प्लस माने करा 5 तले केते गेला 20 एटा केते 10 5 15 जदि एटा टोटली जीरो हो जाय तले एटा केते गेला 20 10 10 हला तले बता एठे में कोन जानिले तले v डैश एटा कोन दिला रे एटा ला 20 5 25 25 10 ना 15 तले 15 थिला एबे केते गेला एटा जीरो हो गेला त 10 कमी गेला आउरी कमी तेनो एठे में कोन देले v डैश ता v डबल डैश बा v डैश इज मच लेस देन केते गेला v तेनो जेतले गोटे अर्थ कंडक्टर हमें रखु से नियर ए कंडक्टिंग बॉडी सेतले कोन छी आरो पोटेंशियल ता कोन छी बहुत कमी गला एदर पोटेंशियल बहुत कमी गला कोनी सती के पोटेंशियल आने गेले अधिक इट रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ चार्ज सो द कैपेसिटी of the conductor increases so on the basis of this principle the capacitor holds or store more amount of charge in a small region so how to construct a capacitor the capacitor हम केमिति करिबा construction of a capacitor तले कैपेसिटर पाई कोन आवश्यकता अछि तले कैपेसिटर पाई मिनिमम दीटा कंडक्टिंग प्लेट दरकार कंडक्टिंग बॉडी दरकार तार भीतर गोटे को चार्ज करिबा आ गोटे को हमें कोन करिबा आर से कनेक्शन करिबा हला तले कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैपेसिटर हला तले on the basis of the principle of the capacitor we get the capacitor consists of hela it consists of two conductors it consists of two conductors separated by some gap a small gap hala it consists of two conductors separated by a small gap hala and ता पर कोन करिबा ना one of the conductor next कर देखिबा तले one of the conductor ता भीतर one of the conductors is charged तले गोटे कंडक्टर में चार्ज करिबा charged and another one is अर्थ आ गोटे को हमें कोन करिबा अर्थ से तो लगेबा खाली गोटे को हमें चार्ज करिबा आ गोटे को हमें अर्थ से तो लगेबा क्लियर नेक्स्ट आ कोन करिबा तो ये स्मॉल गैप रहला तो से गैप रे पुणी यदि हमें अपनी अधिक कैपेसिटी इंक्रीज करे को चाहिबा तले हमें कोन करिबा ना द गैप बिटवीन द two conductors the gap between the two conductors कौन करिए पड़िबो is filled by का से तो filled करिबा ना by का से तो ना some dielectric medium by some dielectric medium clear हला तो हमें कौन पहले प्रथम है it consists of two conductors separated by a small gap then the one of the conductor is charged and another one is connected to earth and the gap between the two conductors is filled by some dielectric
constant by dielectric medium हला तो एई भली भाबरे आमे कोन करियो कैपेसिटर तैयारी करबा हला तो नेक्स्ट देखिबा ताले कैपेसिटर पय कोन देखाला द मिनिमम दीटा कंडक्टिंग प्लेट दरकार कंडक्टर्स दरकार आउ भीतर किसी मीडियम दरकार हला ताले का टाइप्स ऑफ कैपेसिटर types of capacitor types of capacitor नहीं तो साधारणतः देखिए on the basis of the shape of the conductors अलग according to shape according to हमें जो conductor मिले shape of conductors according to shape of conductors हला आमे जो कंडक्टर होचे दिटा कंडक्टर नेले हला नी से कंडक्टर रा शेप अनुसार कैपेसिटर को क्लासिफिकेशन करा दे छै हला तले अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द कंडक्टर एक रहला पैरेलल प्लेट एक रहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक रहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर like this तले एवडे प्लेट and this is another plate hala these two plates minimum two plates these two plates are held parallel and plate these conductors the shape parallel in the form of a plate hala ni tale one is connected to charge and another is connected to arch so this is a hala ni hala parallel plate capacitor hala next तापरे देखिबा another is the spherical capacitor hala the next our spherical capacitor b spherical capacitor yes spherical capacitor yes spherical capacitor the mane the conducting plates are in the form of sphere suppose it is a sphere hala this is one conductor and this is another conductor inside is there is another sphere tale ye gote sphere and the space it is filled up by some dielectric medium hala tale ye la nala spherical conductor we can either it is connected this tale this is charge ame aku charge kari pariba ebong aku arc kari pariba or ame bhitare ko arc kari pariba bahar ko charge kari pariba hala ni tale it can be arranged in two ways either the inner surface is charged outer is charged or inner surface is earth outer is charged but the both the surfaces are in spherical in shape alright अब कैसे concentric spheres ये गोटे sphere both having common center concentric spheres and the gap between the two spheres is filled by some dielectric medium next तले हमें देखले shape अनुसार कौन पहले दो प्रकार गोटेला in the form of plate that is parallel plate in the form of sphere that is the spherical next तेला cylindrical capacitor cylindrical capacitor yes cylindrical capacitor tell it looks like a cylinder ये गोटे cylinder है ये गोटे conducting body एवं hollow cylinder तार भीतर कोन होला आ गोटे cylinder and they are coaxial common axis they have a common axis hela tale gote cylinder bhitor gote cylinder re hela tale gote cylinder tale ye gote cylinder either it is connected to earth or it is connected to charge se barabar outer is charged inner is charged whatever may hela so this is your cylindrical capacitor so regarding by according to the shape of the conductors that used in the capacitor तो सही अनुसार हमें तक क्लासिफिकेशन कले गोटे हला कोन parallel plate capacitor another is spherical capacitor and another one is the cylindrical capacitor then again according to our konachi according to the nature of the dielectric हला हमें कोन कहथिले the capacitor consists of two plates separated by small gap and this gap is filled by some dielectric medium
So according to the nature of the dielectric medium, dielectric means it is a insulating body आमे पढ़ेबा परे तो according to the nature of the dielectric medium तो dielectric medium रा nature अनुसार आमे कोन करिया को क्लासिफिकेशन कराइस केमती ना air suppose air is dielectric तो air capacitor if the capacitor is if the gap between the two plates is filled by capacitor तो air capacitor. Suppose gap between the two plates is filled by mica, then mica capacitor. Mica is a one type of materials capacitor. Right? Then mica capacitor. Same thing, if the gap between the two plates is filled by paper, then it is called paper capacitor. Paper filled capacitor. So like that, paper filled capacitor. If it is by some electrolytes, electrolytes capacitor. Electrolyte capacitor. So according to the dielectric medium, dielectric हला नी तो भितरे को प्रकार मटेरियल हमें रखु छे इंसुलेटिंग मटेरियल हमें कोन रखि छे दिला प्लेट भितरे से तार नाम सारे हमें मध्य कैपेसिटर नाम दे परिबा हला सपोज माने कर तो इटा उठे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड भितरे हमें कोन कले पेपर आ भितरे कोन अछि पेपर तले हमें कोन कहबा पैरेलल प्लेट पेपर फील्ड कैपेसिटर यस parallel plate and bhitar kon dela paper filled capacitor next then hame dekhiba according to the rating power according to rating hame dekhiba rating anusare hala value anusare according to rating rating according to rating ek rela fixed capacitor fixed capacitor and another one is the variable capacitor but fixed capacitor or variable capacitor but fixed capacitor or variable capacitor. So what is the fixed capacitor and what is the variable capacitor? The fixed capacitor whose value is fixed अब variable capacitor का कहना जहां value we can change is the variable capacitor. The symbol of the variable capacitor. So this is your two conducting plates separated by small gap. Hala. So this is the two terminals that used to but that help to connect it in the circuit. So this is a fixed capacitor. Similarly, variable capacitor, yes, the two conducting plate separated by some gap and variable capacitor we mark an arrow mark. So its value can be changed. So this is the symbol of the variable capacitor. This is the symbol of the fixed capacitor. Now it is now theta. Both the plates, both the vertical lines are same size. So these are types of capacitor. Clear? So as we only discuss here parallel plate capacitor. Your spherical capacitor and cylindrical capacitor not belong to your syllabus. Hala? Tala ame dekhiba kon prothame la parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. Hala? And its capacity. So look at a parallel plate capacitor and the capacity kete hai a parallel plate capacitor and its capacity. Suppose we consider this is a parallel plate capacitor it is a parallel plate capacitor wo probably the plates are had parallel to each other suppose this is your x and y both the plates having area like common area cross section by each area cross section a surface area a and they are separated by a small distance let it be d and the gap between the two plates is filled by some dielectric medium class the formula is dielectric insulating material jahar dielectric constant let it be k next one of the plate is connected to
charge and another is connected to earth हला तल गोटे को हमें कौन कले चार्ज कर दिया गला and the charge is given q is given charge हमें कितने देले q and तले another plate y is connected to earth तो what about its capacity तले हमें आर capacity कितने बात करेगा हला तलो तन देखा let us consider a parallel plate capacitor. Let us consider a parallel plate capacitor, which consists of the two plates X and Y. That consists of two plates X and Y. Two plates X and Y. Each of area के देला A. Each of area ना A. Each of area A. They are separated by a small distance d. They are separated. They are separated by a distance. By a distance के देने they are separated by a small gap, small distance के देने लगी. The gap between the two plates is filled. The gap is filled. The gap is filled by a dielectric medium. Filled by a dielectric medium means insulating medium. Dielectric medium of dielectric constant K of dielectric constant dielectric constant K हला तो हमें कॉल करे प्रथम हमें कॉल करे दीटा कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट मेले जार एरिया क्रॉस सेक्शन के तरह से एक एरिया क्रॉस सेक्शन लगे थे A और area cross section लगे they are separated by a small gap d and the gap between the two plates is filled by a dielectric medium by insulating medium of a dielectric constant by relative permittivity जा कोई पारो is equal to ना K clear next तब हमें कौन देखिए तल one of the plate X is charged and the plate Y is arched एबे कौन करिबा तले गोटे प्लेट का में कौन करले चार्ज कर दिया गला एंड अनदर प्लेट का में कौन कर देला ऑफ कर दिया हला द प्लेट X is charged by a charge के गला Q and Y and the plate Y and the plate Y is arched. And the plate Y is arched. हला? And the plate Y is arched. तो हमें कौन कर ले? Plate X को कौन दिया गला चार्ज कर दिया गला, plate Y को कौन कर दिया गला आर्थ कर दिया गला. तो लेबे कौन अब? तो plate Y को तो आर्थ कर दिया गला. due to induction तो कौन अब? तो लेबे कितने गला? एटा दी Q हैला, तो लेबे कितने गला? -Q and this is +Q. हला? Letter Y, the inner surface is -Q, upper surface is +Q, and this +Q, then this connected to the earth, this +Q is linked to the ground. Now, really, then -Q, then due to the induction, then due to the induction, due to the process, induction process, due to the induction, -Q with the charge induced, then -Q with the charge -Q with the charge induced only the inner surface of the plate Y induced in the inner surface of the plate Y
তাহলে এখানে চার্জ কেতে r magnitude কেতে q r magnitude same charge induced ହେଲା তাহলে what is the surface charge density of কাହାର on the each plate the surface charge density কেতে গলা তাহলে surface charge density the surface charge density on each plate কেতে গলা sigma is equal to q magnitude of charge by কেতে গলা area of each plate তাহলে sigma is equal to কেতে গলা q by r की surface charge density q by a कारण r charge वाला q a r charge वाला q a क्लियर তাহলে ଏବେ ଆମେ কোন দেখো তাহলে ଆମେ কোন হবো তাহলে যেতেବେଳେ Gauss law अनुसार ଆମେ কোন জানিছে তাহলে when there is a charged plate there is an electric field near it তাহলে যদি if we consider suppose this is the consider a point p তাহলে due to this there is an electric field due to this there is an electric field ହେଲା তাহলে due to the two oppositely charged plate there is an electric field between the two plates ହେଲା so there is an electric field between two plates there is an electric field between two plates so according to the Gauss law so what is the electric field between the two plates so I mean the F3 P is a point and between point number so what is the electric field at the point P that is called answer कौन थिला sigma by 2 epsilon 0 sigma by 2 epsilon 0 ହେଲା so using Gauss law we get using Gauss law काली पाहन थिला using Gauss law next class पर Gauss law में पढ़िले using Gauss law then the electric field ହେଲା then inside the electric field inside the body the two plates inside the two plates the electric field inside the two plates is uniform and is given by P is equal to S sigma by epsilon 0 जदि एडी कोन थादा AR बा वैक्यूम थादा जदि एडी कोन अछि इलेक्ट्रिक अछि त कोन लिखबा सिग्मा बाय एप्सिलॉन then there is a medium if there is no medium we can write sigma by epsilon 0 এবং যেহেতু এটি মিডিয়াম আছে তাহলে কেন হলো sigma by epsilon and this is equal to sigma by epsilon 0 into epsilon r है epsilon r is nothing but that is known as the dielectric constant that is sigma by epsilon 0 into k clear so the electric field inside the kahalo between the two plates will lagite so what is the potential difference between the two plates tale kono tale potential difference between the two plates due to the charge kate gala tale potential difference between the two plates numerical jodi ame dekhiba tale the potential difference between two plates ହେଲା তাহলে কত গলা তাহলে v is equal to by e is equal to কত দিলা v by d তাহলে যেহেতু নিউমেরিক্যালি e is equal to v by d তাহলে we can write v is equal to কত গলা e into d ହେଲା তাহলে e is equal to কত গলা যেহেতু e is equal to v by d ହେଲା তাহলে v is equal to d তাহলে d কত আছে তাহলে that is equal to sigma by epsilon 0 into k into d তাহলে this is the potential difference between the two plates তাহলে what is the rising potential due to this প্রথমে যেটা চার্জ নথিলা আগে যেটা potential difference কত 0 যেটা আমি চার্জ দিলে এতি potential difference হইছলা তো rising potential কত হলা due to the charge q তাহলে কি হলা তাহলে the rising potential কত গলা তাহলে what is the capacity yes the capacity is equal to kete gala by it can be written as we can write sigma is equal to kete q by yes
क्यू बाई केते कहदिला एटा कोन भैले डला हां एप्सिलॉन क्यू बाई ए हला सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए तले केते देगला क्यू बाई ए एटा लागते एप्सिलॉन 0 k into d. So this is the potential difference between the two plates due to the charge केते आइगला q. तले what is the capacity? तले capacity केते आइगला तले capacity yes capacity c is equal to क्या लिख पाएगा q by v, that is the charge to the rising potential. c is equal to q by v. तले q divided by v, we can write q divided by v, v लगेते q by a epsilon 0 k into d distance log. तले we can write है ना तले epsilon 0 k a divided by d है ना तले epsilon 0 k a divided by d. So this is your compile potential difference एगाने के epsilon 0 k a by d. तले तो क्या मैं कौन के बाद capacity of car capacitor of a parallel plate capacitor c is equal to q by v अर्थात epsilon 0 k a by d. Clear? तले हम देखिए तले on which factors the capacity of a parallel plate capacitor depends on. तले ही तले this is the expression for the capacity of a parallel plate capacitor. c is equal to epsilon 0 k a by d. तले on which from that expression we get from the expression we get from the expression we get yes tale capacity depends on capacity है ना capacity depends on है ना capacity of parallel plate capacity of parallel plate capacitor parallel plate capacitor depends on एक रहता है के अर्थात डाइलेक्ट्रिक नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम दुई रे एरिया जैसे एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट area of each plate and distance between the two plates है ना तले डाला नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड डाइलेक्ट्रिक proportional to k एवं area of the plates directly proportional to a एवं distance between the two plates कौन डाले inversely proportional to k है ना. So this is nature of the medium. c is directly proportional to k and c is directly proportional to a and c is inversely proportional to d है ना. तले the capacity of a spherical plate parallel plate capacitor depends on the three factors. एक रहला nature of the medium, दो रहला area of the two plates and distance between the two plates है ना. तो in case of suppose the two plates is filled by air, special case है ना. तो if the two plates filled by air or vacuum, if the two plates are filled by air or vacuum, yes, the epsilon r is equal to देगला 1. Epsilon r means k is equal to 1. So k is equal to here k is equal to 1. The capacity कितना देगला? So epsilon 0 k is equal to 1 a by d. Clear? So this is the capacity for air or vacuum. है ना? तो हमें देख ले for a dielectric medium, if the medium is there, the capacity कितना देगला? C is equal to epsilon 0 k a by d. एवं if the air is there, then epsilon 0 a by d.
ହେଲା তাহলে if we divide c by c0 তাহলে আমি কোন পাইবা now c by c0 তাহলে কেটে গেল epsilon 0 ka by d divided by epsilon 0 কেটে গেল a by so this is equal to k as k is greater than 1 for any other medium তাহলে কোন হবে তাহলে that implies c is directly proportional c is greater than cj অর্থাৎ the if the two plates between the two plates is filled by some dielectric then its capacity increases ହେଲା তাহলে আমি গ্যাপ রাখলে যেতি হবো তা ভিতরে আমি কোন করিয়া ডাইলেক্ট্রিক মিডিয়াম ভর্তি করলে তাহলে capacity টা পুরো বড়ি যাবে ক্লিয়ার তাহলে the capacity increases তাহলে কি হবে thus the capacity increases if a dielectric is inserted is placed between the two plates clear placed between two plates ହେଲା এই যে আমি দুইটা প্লেট ভিতরে ডাইলেক্ট্রিক মিডিয়াম রাখলবা তাহলে কোন হবে এয়ার রাখলে যা হবে ডাইলেক্ট্রিক মিডিয়াম রাখলে তার k টাইমস কোন হবে ক্যাপাসিটি বাড়ে যাবে